हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल सुभी ट्यूटोरियल। तो पिला माने आमे माने ओटीटी पाई सीडीपी थ्योरी क्लास कंप्लीट कर सारचे। तो पिला माने एबे आमे एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करिबा। तो पिला माने जदि आपण माने सीडीपी कंप्लीट थ्योरी क्लास देखि नांती देन प्रथमे थ्योरी क्लास सब देखि दियंतु जहा फल रे आपण माने इजीली समस्त क्वेश्चन रो आंसर सब दे पारिबे। तो पिला माने आपण माने निजे चेक करंतु कहार कतोटी आंसर ठीक होउची एवं मते कमेंट सेक्शन रे कमेंट करके जणेबे जे 30 रो आपण मानकर केतोटी आंसर ठीक हैला। तो पिला माने एमती आमे बहुत सारा पाखा पाखी 1000 क्वेश्चन सीरीज करिबा। तो पिला माने जदि आपण माने मो क्लास रे न्यू अछंती दया करी चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दियंतु जहा फल टीचिंग रिलेटेड समस्त प्रकार वीडियो एवं इन्फॉर्मेशन आपण माने मो चैनल माध्यम रे सर्वप्रथम पाई परिबे। तो चलंतु पिला माने आज रो वीडियो टिक आमे स्टार्ट करिबा। तो फास्ट क्वेश्चन कहला पिला माने डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम। तो ऑप्शन देछि जनरल टू स्पेसिफिक, कॉम्प्लेक्स टू स्पेसिफिक, स्पेसिफिक टू जनरल और कॉम्प्लेक्स टू सिंपल। तो पिला माने जते बेले आमे डेवलपमेंट पढ़ी दिले तुमको मु पढ़ेइतली जे डेवलपमेंट कोन हेथाय जनरल टू स्पेसिफिक हेथाय एवं कोन हेथाय ना सिंपल रो कॉम्प्लेक्स हेथाय। तो एटी किंतु कौन देछि ऑप्शन रे केवल फर्स्ट टाइम ठीक देछि। सेकंड देखो कॉम्प्लेक्स टू स्पेसिफिक हो जेटा केबे भी होबनी, स्पेसिफिक टू कॉम्प्लेक्स हेबो। सेमते स्पेसिफिक टू जनरल हेबोने पिला माने जनरल टू स्पेसिफिक हेबो एवं कॉम्प्लेक्स टू सिंपल नुहे सिंपल टू कॉम्प्लेक्स हेबो हमर डेवलपमेंट। तो बुझी पारलो पिला माने आंसर केमटी हेबो। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहला बेस्ड ऑन द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रायर लर्निंग टैक्स ऑन द न्यू टैक्स हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रांसफर लर्निंग अकर। तो केते प्रकार लर्निंग देखा जाए। ऑप्शन देला 5 8 3 2। तो आंसर हम पिला माने 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पिला माने कहला अनुपमा ए साइंस टीचर ऑफ्टन मेक्स लिंकेज इन हर क्लासरूम विथ द कॉन्सेप्ट स्टूडेंट आर स्टडिंग इन मैथमेटिक्स। तो पिला माने अनुपमा जने साइंस टीचर से लिंक प्रोवाइड करती क्या विषय रे ना क्लासरूम विथ कॉन्सेप्ट ऑफ स्टूडेंट आर स्टडिंग इन मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स रो कॉन्सेप्ट कौन रही ताकू से पढ़ुचंती दिस काइंड ऑफ पेडागोजी। तो ए पेडागोजी से मान को कोथरे सहायता करे। ऑप्शन देला वुड हेल्प इन ट्रांसफर ऑफ लर्निंग एंड प्रमोट इंटरडिसिप्लिनरी, वुड हिंडर इन एक्वाजिशन ऑफ नॉलेज। नेक्स्ट ऑप्शन कहला वुड हिंडर लर्निंग एज इट वुड इंक्रीज द स्टूडेंट बर्डन, वुड प्रमोट मिसकनसेप्शन एग्नेस्ट चिल्ड्रेन। तो पिला माने एटा कोथरे हेल्प करथाय ना वुड हेल्प इन ट्रांसफर ऑफ लर्निंग एंड प्रमोट इंटरडिसिप्लिनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहला शिफ्टिंग फ्रॉम राइट हैंड ड्राइविंग इन यूएसए टू ए लेफ्ट हैंड ड्राइविंग इन इंडिया इज एन इलस्ट्रेशन ऑफ। तो एटा को प्रकार इलस्ट्रेशन। ऑप्शन देला नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग, पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग, न्यूट्रल ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग, बोथ न्यूट्रल एंड पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग। तो यार आंसर हो पिला माने नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन कहला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट लर्निंग। तो को प्रकार फैक्टर जाक लर्निंग उपरे इफेक्ट पकाए। ऑप्शन देला मोटिवेशन ऑफ लर्नर, लर्नर मोटिवेशन, मैच्योरेशन ऑफ द लर्नर, लर्नर मैच्योरेशन मध्य प्रभाव पकाए, टीचिंग स्ट्रैटेजी से को भले स्ट्रैटेजी फॉलो करूची, फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ आफ्टर ऑफ द लर्नर। तो लर्नर फिजिकल आ इमोशनल हेल्थ किभली रही। तो पिला माने प्रत्येक गोटे गोटे फैक्टर लर्निंग उपरे प्रभाव पकाती से ऑप्शन हम कौन बी। नेक्स्ट कहला हु हैड गिवन हेरिटेज ऑफ ह्यूमन नीड्स। ऑप्शन देला मोस्लो, थॉर्नडाइक, गुलफोर्ड, कर्लर। तो ऑप्शन हम पिला माने मोस्लो। हु हैड गिवन हेरिटेज ऑफ ह्यूमन नीड्स। तो ह्यूमन नीड्स हेरिटेज किए प्रोवाइड करते पिला माने ऑप्शन देला मोस्लो, थॉर्नडाइक, गुलफोर्ड, कोहलर। तो आंसर हम मोस्लो। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमोशन। तो पिला माने निम्नलिखित मध्य केवड़ा गोटे इमोशन। ऑप्शन देला अम्यूजमेंट, अटेंशन, स्टिमुलस, मेमोरी। तो आंसर हम पिला माने इमोशन टा गोटे की हबो अम्यूजमेंट।
नेक्स्ट कहला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मोटिव्स आर कंसीडर एज प्राइमरी मोटिवेस। तो पिला माने कोटा गोटे प्राइमरी मोटिवेशन प्रोवाइड करथे। ऑप्शन देला सोशल मोटिव्स, फिजियोलॉजिकल मोटिव्स, साइकोलॉजिकल मोटिव्स और एजुकेशनल मोटिव्स। तो प्राइमरी स्टेज रे पिला को हमें को मोटिवेशन देबा दरकार ना फिजियोलॉजिकल मोटिव्स। नेक्स्ट कहला रिवार्ड इज व्हाट काइंड ऑफ मोटिवेशन। तो पिला माने हमें जानिचे आमे स्टूडेंट मान को भीतर मोटिवेशन आनिया पे हमें कोन से मन प्रोवाइड करछु रिवार्ड दोछु। तो से रिवार्ड टा गोटे की प्रकार मोटिवेशन। ऑप्शन देला पॉजिटिव एंड डायरेक्ट, पॉजिटिव एंड इनडायरेक्ट, नेगेटिव एंड डायरेक्ट, नेगेटिव एंड इनडायरेक्ट। तो करेक्ट आंसर हो पिला माने पॉजिटिव एंड डायरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कहला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मोटिवेशन इज करेक्ट। तो कोटा करेक्ट मोटिवेशन को लेके फास्ट कहला दी प्रकार देछि गोटे हला एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन आ गोटे देछि इंट्रिंसिक मोटिवेशन। एवं एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन को नहीं कहिछि एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन रेफर्स टू द परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्टिवली इन ऑर्डर टू अटेन एन आउटकम एंड कम्स फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द इंडिविजुअल। गोटे इंडिविजुअल मन रे जहाँ भी आउटसाइड रू क्रिएट हुए तार मोटिवेशन ता कौन कह जाए एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कह जाए बोली कहला। नेक्स्ट इंट्रिंसिक मोटिवेशन को नहीं कौन कहला ना इट रेफर्स टू मोटिवेशन दैट इज ड्राइवन बाय एन इंटरेस्ट और एंजॉयमेंट इन द टास्क इटसेल्फ एंड एग्जिस्ट विथिन द इंडिविजुअल। तो गोटे इंडिविजुअल रो एंजॉयमेंट हो कि निजर इंटरेस्ट द्वारा जहाँ से करि थाए तो ताको कौन कह जाए इंट्रिंसिक मोटिवेशन बोली कह जाए। तो पिला माने दीटा जाक तो नहीं कि ठीक कही सी स्टेटमेंट जाक तो से यार करेक्ट ऑप्शन कोड हम ना बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन कहला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इंट्रिंसिक मोटिवेशन। तो या भितर कोटा गोटे इंट्रिंसिक मोटिवेशन। ऑप्शन देला स्टूडेंट लर्न्स फॉर पर्सनल सैटिस्फैक्शन, टीचर गिव्स रिवार्ड टू स्ट्रेंथन लर्निंग, इट मीन्स पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, इट मीन्स पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, इट मीन्स नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। तो ऑप्शन हम पिला माने जेतु इंट्रिंसिक पचारछि सेति आंसर हम स्टूडेंट लर्न फॉर पर्सनल सैटिस्फैक्शन जोटा ता निजो इटसेल्फ द्वारा से करथाय। A student work hard to get first rank in his class. This type of motivation behind his hard work is। तो पिला माने से क्लास रे फास्ट रहा जो हार्ड वर्क होची सेटा गोटे को प्रकार मोटिवेशन। ऑप्शन देला इंट्रिंसिक मोटिवेशन, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, जीरो मोटिवेशन, नॉन। तो आंसर हम एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ मोटिवेशन। तो पिला माने ए भितर कोटा गोटे मोटिवेशन कार्य नुहे। ऑप्शन देला टू सिक्योर मोर मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। तो यहाँ तो पिला माने गोटे मोटिवेशन नुहे फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट टू मेक द बिहेवियर ऑफ गोल ओरिएंटेड ये हम टू मेक द चाइल्ड एक्टिव फॉर लर्निंग, लर्निंग क्षेत्र चाइल्ड को एक्टिव कराइबा, टू मेक द बिहेवियर डिसिप्लिन एवं डिसिप्लिन बिहेवियर पिलांक भीतर सृष्टि कराइबा। तो कोटा ताले गोटे फंक्शन नुहे ये ऑप्शन ए हम टू सिक्योर मोर मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन। तो पिला माने इंट्रिंसिक मोटिवेशन ए भितर कोटा। ऑप्शन देला सिलेक्शन इन स्कूल फुटबॉल टीम, सॉल्विंग ए प्रॉब्लम फॉर इट्स ओन सेक, गेटिंग ए ड्रेस ऑन बर्थडे और ऑल ऑप्शन आर राइट। तो पिला माने इंट्रिंसिक बोले मु कोन कहतली जोटा निज मनरु ताले कोटा हबो सॉल्विंग ए प्रॉब्लम फॉर इट्स ओन सेक। नेक्स्ट क्वेश्चन कहला अशोक इज वेरी फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट एंड ही इज very good at it too. He is the captain of his college team. He spends long hours playing or watching cricket and never get tired of or bored. तो पिला माने अशोक गोटे छात्र जे कि भल क्रिकेट खेलुची तांको कॉलेज टीम रो से होची कैप्टेन और से सब बड़े खेल रे एवं क्रिकेट खेल रे से निजको मनोनिवेश करथाय एवं केबे मध्ये टायर्ड किमे बोर हुए नाही। तो क्वेश्चन पचाला व्हिच पर्सनल फैक्टर इज अफेक्टिंग द लर्निंग इन हिज एग्जांपल्स। तो एथिरे को प्रकार फैक्टर अफेक्ट पकाउची। तो ऑप्शन देला मैच्योरेशन, मोटिवेशन, सेल्फ कॉन्सेप्ट, लेवल ऑफ एस्पिरेशन। तो पिला माने एठी को प्रभाव पकाउची मोटिवेशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहला डैश occurs when there are orderly and progressive changes in a human being due to maturation and experience। तो मैच्योरेशन एंड एक्सपीरियंस क्षेत्र में कौ प्रकार प्रोग्रेसिव देखा जाए। ऑप्शन देला ग्रोथ, डेवलपमेंट, फिजिकल चेंजेस, मेंटल चेंजेस। तो आंसर हो पिला माने डेवलपमेंट। नेक्स्ट कहला इन हुई स्टेज तो फिजिकल ग्रोथ इज रैपिड। कौ समय फिजिकल ग्रोथ बेसी देखा जाए। एर्ली चाइल्डहुड, इन्फेंसी, एडोलेसेंस, स्कूल एज। तो पिला माने आमे प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ पढ़ला बेले पढ़ितले जे हमर ग्रोथटा कोन होता पूरा एर्ली चाइल्डहुड माने इन्फेंसी रु जे जेती बढ़ी बढ़ी जाए सेती की ग्रोथ रेट कमी कमी जाए, बट बेसी कोड देखा जाए इन्फेंसी स्टेज रे ही देखा जाए रैपिड ग्रोथ। नेक्स्ट कहला हुईच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एर्ली चाइल्डहुड। तो एर्ली चाइल्डहुड क्षेत्र में केउं प्रकार कैरेक्टरिस्टिक्सटा देखा जाए नहीं। ऑप्शन देला प्री गैंग एज, इमिटेटिव एज, क्वेश्चनिंग एज, प्ले एज। तो पिला माने प्री गैंग एज तो देखा जाए, इमिटेटिव एज भी देखा जाए, क्वेश्चनिंग एज भी देखा जाए, बट प्ले एज ए समय देखा जाए न थाए एर्ली चाइल्डहुड समय रे। नेक्स्ट पचारा द चाइल्ड बिगिन्स टू फॉर्म कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल एंड सोशल रियलिटी। दिस इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जिते बड़े गोटे पिलाटा फिजिकल आउ सोशल रियलिटी रो कॉन्सेप्ट को फॉर्म करे ताको को प्रकार डेवलपमेंट कहा जाए ना इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट बोली कहा जाए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिफाइन्स मैच्योरेशन। तो को ऑप्शनटा मैच्योरेशन को बेस्ट वे रे डिफाइन करुचे। ऑप्शन देला इट इज डायरेक्टली बेस्ड ऑन सोशल कॉग्निटिव लर्निंग। एटा सोशल कॉग्निटिव लर्निंग को बेस करिकी इट इज एन ऑटोमेटिक बायोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी दैट मैच्योरली अनफोल्ड्स ओवर टाइम। तो मैच्योरेशन गोटे बायोलॉजिकल प्रोसेस जोटा कि समय अनुसार देखा जाए। इट डज नॉट टेक प्लेस इन ह्यूमन बीइंग्स। एटा ह्यूमन बीइंग क्षेत्र में देखा जाए। तो पिला माने एटा ऑप्शन देखु देखु ही जना पड़छ एटा हबनी बोली। नेक्स्ट ऑप्शन कहला इट डज नॉट इट इज द बेसिस ऑफ ऑल फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट। तो एटा होची फिजिकल और फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट। तो एटा तो नुहे पिला माने। तो करेक्ट आंसर हम तुम कौटा ना ऑप्शन नंबर बी। एटा होची गोटे बायोलॉजिकल प्रोसेस आ एटा समय क्रमे देखा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहला पिला माने द डिटरमिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस इन ह्यूमन आर रिलेटेड टू। ऑप्शन देला इंटरैक्शन विथ देयर एनवायरनमेंट, डिफरेंस इन देयर हेरिडिटी, डिफरेंस इन बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, इंटरैक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। तो पिला माने जेहेतु सी पचारुची ह्यूमन भितर डिफरेंस तो एटा केमती देखा जाए ना जेते बड़े हेरिडिटी आ एनवायरनमेंट भितर इंटरैक्शन देखा दिए। Environmental factors that shape development include all of the following except quality of education, physical, quality of nutrition, culture। तो पिला माने एनवायरनमेंट फैक्टरटा कोटी कोटी प्रभाव पकाई थाए। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रभाव पकाए, क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिशन प्रभाव पकाए आ कल्चर मध्य प्रभाव पकाए। बट ये क्वेश्चन देछि एक्सेप्ट बोले गोटे क्वेश्चन वाटे देछि सेतपे आंसर हो कोडा फिजिक्यू। Which of the following is predominantly a heredity related factor? Option देला attitude towards peer group, thinking pattern, color of the eyes, participation in social activities। तो पिला मान जेतु हेरिडिटी पचारछि तमे जानछ हेरिडिटी कहले कोन ना जोटा पेरेंट्स को ऑफस्प्रिंग माने तांको पिता माता ठारू तांको अपत्य बा तांको छुआ मान को पाकु जो सब ट्रेड ट्रांसफर होइथा हमें ता कोन कहिथाउ हेरिडिटी बोली कहिथाउ। तो एटीट्यूड तो केबे माने पियर ग्रुप मान को प्रति जहाँ भी एटीट्यूड देखौचे तो सेटा तो कभी भी ट्रांसफर होने कि थिंकिंग पैटर्न तो सेटा भी हुएनी आउ पार्टिसिपेशन इन सोशल एक्टिविटी एटा भी नुहे। तो कलर ऑफ आई एटा पिला मान देखा जाए तमे देखिथिबो जदी पिता मातांकर कहार भी ब्लू आईज अछि तो बहुत मैक्सिमम चांसेस अछि छुआ क्षेत्र रे भी ब्लू आईज देखा दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहला Which one of the following statement is true regarding the role of heredity and environment in human development? Option देला the role of environment is almost fixed, environmental role fixed, whereas the impact of heredity can be altered। किंतु heredity क्षेत्र रे alternate देखा जाए। Next option कहला the theories based on the behaviorism are largely based on the role of nature in human development। Next option कौन कहते देखि देबा
The relative effect of heredity and environment vary in different areas of development. The heredity और environment को लेके different area को लेके vary करे. The government of India is based on the role of nature in human development. तो पिला माने यार आंसर हे जिवो कोन ना सी. 25 नंबर क्वेश्चन कहला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू. जेनेटिक मेकअप इम्पैक्ट रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ एन इंडिविजुअल टू क्वालिटीज ऑफ द एनवायरनमेंट. तो जेनेटिक टा इफेक्ट पकाए. नेक्स्ट कहला अडॉप्टिव चिल्ड्रेन पोजेस सेम आईक्यूज एज देयर अडॉप्टिव सिबलिंग. तो चिल्ड्रेन तांकर सिबलिंग का सहित सेम आईक्यू रुहे जो मान को अडॉप्टिव चिल्ड्रेन मानकर. नेक्स्ट कहला एक्सपीरियंस डॉग्स नॉट इन्फ्लुएंस ब्रेन डेवलपमेंट. एवं नेक्स्ट ऑप्शन कहला इंटेलिजेंस रिमेन्स अनअफेक्टेड बाय द स्कूलिंग. तो एटार करेक्ट आंसर हबो ऑप्शन नंबर ए जेनेटिक मेकअप इम्पैक्ट रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ एन इंडिविजुअल टू क्वालिटीज ऑफ द एनवायरनमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन कहला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड. फर्स्ट ऑप्शन कहला द रिलेटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ प्योर एंड जीन्स आर नॉट एडिक्वेट. हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट डू नॉट ऑपरेट टुगेदर. prosperity is related to environment while actual development requires heredity. Now next कहला both heredity and environment contribute 50% each in the development of a child. The answer हबो कोडा the relative contribution of pure and genes are not additive. Next कहला in order to instill a positive environment in a primary class, a teacher should option dela wish each child in the morning, not discriminate and set the same goal for every child, allow them to make groups on their own on the basis of sociometry during group activities, narrate stories with positive ending. तो आंसर हो पिला माने ऑप्शन नंबर सी. तो गोटे टीचर प्राइमरी काम होची जे सेमानको जेहेतु सेमाने तांकर चाहिए छुआ माने जे तांकर निज हिसाब से ग्रुप बनाया पे ताकू से सुजोगटा दबा. नेक्स्ट ए 6-year-old गर्ल शोज एक्सेप्शनल स्पोर्टिंग एबिलिटी. Both of her parents are sport person. Send her for coaching every day and train her on weekends. Her capabilities are most likely to be the result of an interaction between ऑप्शन देला हेल्थ एंड ट्रेनिंग, डिसिप्लिन एंड न्यूट्रिशन, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. तो पिला माने जेहेतु बापा माँ मध्य स्पोर्टमैन थिले, झील मध्य स्पोर्टमैन अच्छे. तो यहाँ कौन जना पड़े हेरिडिटी. आम जाचे जे गोटे छात्रर डेवलपमेंट कहार प्रोडक्ट ना बोथ एनवायरनमेंट एंड हेरिडिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन कहला स्टूडेंट डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन ऑप्शन देला हेरिडिटी, एनवायरनमेंट, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, नन ऑफ द अबव. तो यार आंसर ऑलरेडी मो प्रीवियसली कही जे डेवलपमेंट कहार प्रोडक्ट ना बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट. तो पिला माने आज लास्ट क्वेश्चन है डैश प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द एजुकेशन ऑफ स्टूडेंट. हेरिडिटी, एनवायरनमेंट, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव. तो आंसर होला पिला माने बोथ ऑफ द अबव, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट. तो पिला माने आशा करछि क्लास आपण मानक पे बहुत हेल्पफुल रहइबो. जदि आपण माने मो चैनल नुआ अछंती दया करी चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दियंतु, जहा फल ए भली समस्त प्रकार एमसीक्यू सीरीज आगो को मो सहित आपण माने कंटिन्यू रहिबे. धन्यवाद.